ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमा उमा सहितायां अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। ऋषिरुवाच। आसीच्छुम्भासुरो दैत्यो निशुम्भक्ष प्रतापवान् त्रैलोक्यमोजसाक्रान्तं भ्रातृभ्यां सचराचरं ताभ्यां प्रीपीडिता देवा हिमवन्तं समाययुः। जननीं सर्वभूतानां कामदात्रीं ववन्दिरे। देवाऊचु जय दुर्गे महेशानी जयातमीय जनप्रिये त्रैलोक्यत्राणकारिण्ये शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्तिप्रदायिन्ये पराम्बाय नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्तिस्थित्यन्तकारिके कालिकारूपसम्पन्ने नमस्ताराकृते नमे छिन्मस्ता स्वरूपाय श्रीविद्याय नमोस्तुते। भुवनेशी नमोस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते नमोस्तु बगलामुख्ये धूमावत्ये नमो नमः। नमः स्त्रीपुरसुन्दरे मातङ्गे ते नमो नमः। अजिताय नमस्तुभ्य विजयाय नमो नमः। ज्याय मङ्गलाय ते विलासिन्य नमो नमः। दोगध्रीरूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराकृतेस्तु ते। नमो पराजिताकारे नित्यकारे नमो नमः। शरणगतपालिन्ये रुद्राण्ये ते नमो नमः। नमो वेदान्तवेद्याये नमस्ते परमात्मने अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमो नमः। इति देवै सतुता गौरी प्रसन्ना वरदा शिवा रुवाच त्रिदशान् सर्वान् युष्यमाभिस्तूयतेऽत्र का ततो गौरी तनोरेका प्रादुरासीत् कुमारिका सोवाच मिषतां तेषां शिवशक्तिं परादरात्। स्तोत्रं मे क्रियते माता समस्ते स्वर्गवासिभिः निशुम्भ दैत्याभ्यां प्रबलाभ्यां प्रपीडिते शरीरो कोशाद्य तस्या निर्गता तेन कौशिकी नाम्ना सा गीयते। साक्षात् शुम्भासुरनी ब्रह्मणि सैवोग्रतारिका प्रोक्ता महोग्रतारिकापि च प्रादुर्भूता यथा सा वै मातङ्गीतयुज्यते भुवि। बभाषे निखिलान् देवान् यूयं तिष्ठथ निर्भया कार्यम्ब साधयिष्यामि स्वतन्त्राहं विनाक्षयम्। इत्युक्त्वा सा तदा देवी तरसान्तर्हिताभवत्। चण्डमुण्डो तु ता देवी मद्द्रष्टा सेवकोतयो दृष्ट्वा मनोहरं तस्या रूपं नेत्रसुखावहं। पैततुस्तोधरामध्य नष्टसंज्ञो विमोहितो गत्वा व्याजहर्तु सर्वं रागवृत्तान्तमादिता। दृष्ट्वा काचिन्मया पूर्वा नारीराजन्मनोहरं हिमवच्छिखरे रम्ये संस्थिता सिंहवाहिनी समन्तादेव कन्याभिः सेविता बदपाणिभिः। कुरुते पादसंवाहा काची सस्कुरुते कचान् पाणिसंवाहन काचिन्नेत्राजनं न्यधात्। काचिदग्रहीत्वा हस्तिना दर्श्यते मुखं नागवलिं ददात्येका लवङ्गैलादिसंयुतां। पतद्ग्रहं करे कृत्वा स्थिता काचित् सखी पुरा भूषयत्यखिलाङ्गानि काचिदूषाम्बरादिभिः। कदलीस्तम्भजघोरुकीर्णासाहेदोर्लता रनं मञ्जीरचरणा रम्यमेखल्यायुता। लसत्कस्तूरिकामोदमुक्ताहारचलस्तनी ग्रैवये कलशसद्ग्रीवा ललन्तीदां मण्डिता। अर्धचन्द्रधरा देवी मणिकुण्डलधारिणी रम्यवेणीर्विशालाक्षी लोचनत्रयभूषिता। साक्षरामालिकोपेता पाणिराजितकङ्कणा सर्वनो शुभ्रवस्त्रावृता गौरी पद्मासनविराजिता। काश्मीरबिन्दुतिलका चन्द्रालङ्कृतमस्तका
तडिद्दध्युर्तिमहामूल्याम्बरचोलोन्नमत्कुचा भुजैरष्टाभिरुत्तुङ्गैर्धारयन्ती वरायुधान् तादृशी नासुरी नागी न गन्धर्वी न दानवी विद्यते त्रिषु लोकेषु यादर्शी सा मनोरमा तस्मात् सम्भोग्य योग्यत्वं तस्या सत्यवयेव शोभते नारीरत्नं यथा सावे पुरन्दनं च भवान् प्रभु इत्युक्तं चण्डमुण्डाभ्यां निशम्य स महासुरा दूतं सुग्रीवनामानं प्रेषयामास्तां प्रति गच्छ दूततुषाराद्रो तत्रास्ते कापि सुन्दरी सा नेत्वया प्रयत्नेन कथयित्वा वचो मम इति विज्ञापितस्तेन सुग्रीवो दानवोत्तम गत्वा हिमाचलं प्राह जगदम्बा महेश्वरीं दूतवाच देवी शुम्भासुरो दैत्यो निशुम्भस्तस्य चानुजा विख्यातास्त्रिषु लोकेषु महाबलपराक्रम चरोऽहं प्रेषितस्तेन सन्निधीते समागमम् स यजगो सुरेशानि तत्समाकर्णयाधुना इन्द्रदीनस्मरे जित्वा तेषां रत्नान्यपाहरं देवभागं स्वयं भुञ्जे यागे दत्तं सुरादिभिः स्त्रीरत्नं त्वामहं मन्ये सर्वरत्नो परिस्थितं सा त्वं ममानुजं मा वा भजतात कामजे रसे इति दूतोक्तमाकर्ण्य वचनं शुम्भ भाषितं जगत्सा महामाया भूतेश प्राणवल्लभा देवीवाच सत्यं वदसि भो दूत नानृतं किञ्चिदुच्यते परन्त्वके वेका कृता पूर्वप्रतिज्ञा तां निबोध मे यो मे दर्पं विधुनुते यो मा जयति संगरे उत्सहे त्वमहं कर्तुं पतिं नान्यमिति ध्रुवं स त्वं कथय शुम्भाय निशुम्भाय वचो मम यथा युक्तं भवेत् तत्र विद्धातु तथात्र स इत्थं देवी वचः श्रुत्वा सुग्रीवो नाम दानवा राज्ञ विज्ञापयामास गत्वा तत्र सविस्तरम् अथ दूतोक्तमाकर्ण्य शुम्भोभैरवशासना धूम्राक्षं प्रहासक्रोध सेनान्यं बलिनाम्बरं हे धूमाक्ष तुषाराद्रो वर्तते कापि सुन्दरी तामानयदुत्रं गत्वा यथा यास्यति सात्रवे तस्या आन्यनेभिर्गीर्तिर्न कार्यसुरसत्तम युधं कार्यं प्रयत्नेन यदि सा योद्धुमिच्छति एवं विज्ञापितो दैत्यो धूम्रलोचन संज्ञक गत्वा हिमाचलं प्राह भुवनेशीमुमांशजां हर्तुर्मामानितिकं गच्छ नो चेत् त्वां घातयाम्यहं षष्ठचासुराना सहिता सहस्राणा नितम्बिनी दैत्यराट प्रशितो वीर हंसि चेतिकं करोमि ते परन्तव साधयं गमनं मन्ये सङ्ग्राममन्तरा इत्युक्तस्तामन्धाववध्यानवो धूम्रलोचना हुङ्कारोच्चारणेनैव तं ददाह महेश्वरी तथा प्रभृति सा देवी धूमावत्युच्यते भुवि आराधिता स्वभक्तानां शत्रुवर्गनि कीर्तिनी धूम्राक्षे निहते देव्या वाहनेनातिकोपिना चर्वितास्तत्र न सर्वे पल्लयान्ते वशेषिता इत्थं देवया हतं दैत्यं श्रुत्वा शम्भुप्रतापवान् चकार बहुलं कोपा सन्दशोष्टपुटद्वये चण्डमुण्डरबीजं प्रेषयत्क्रमतोऽसुरान् तेऽपि चाज्ञापिता दैत्या ययुर्त्रयाम्बिका स्थिता सिंहारूढा भगवती मादिभिराक्षितां भासयन्ती दिशो भासा दृष्ट्वोजुर्धान्वर्षभा हे देवी तरसा मूलं याहि शम्भुनिशुम्भयो अन्यथा घातयिष्याम सगनां त्वां सवाहनां वृणीष्वं तं पतिं वामे लोकपालादिभिः स्तुतं प्रपत्सयसे महानन्दं देवानामपि दुर्लभम् इत्युक्तमाकल्याम्बा संयत्वा परमेश्वरी उदाजहार सा देवी शून्यतं रसवद्वच आदित्यो महेशान
परब्रह्मा सदाशिवा यतत्त्वं न विदुर्वेदा विष्णुवादिना च का कथा तस्याहं प्रकृतिसूक्ष्मा कथमन्यं पतिं वृणे सिंहिकामातुरा नैव जम्बुकं वृणुते क्वचित् कर्णे गर्दभं नैव दीपिनी शशकं न वा मृषावदत्पो दैत्या व्यालनियन्त्रिता यूयं प्रयात पातालं युध्यवं शक्तिरस्ति चेत् इति क्रोधकरं वाक्यं श्रुत्वोच्चुस्ते परस्परम् अबलां मनसि ज्ञात्वा न हन्मो भवन्ति वयम् अथो स्थिरैः पञ्चासे युधेच्छा मानसेऽस्ति चेत् तेषामेवं विवदतां कलहा संवृदता ववृषु समरे बाणा उभयोर्दलयोषिता एवं ते समरं कृत्वा लीलया परमेश्वरी जघान चण्डमुण्डाभयां रक्तबीजं महासुरं देशबुद्धिं विद्यायापि तित्रद्शारातयोपयमि अन्ते प्राप्त परं लोकं यललोकं यान्ति तज्जना इति श्रीशिवमहापुराणे पंचमसहितायां धूम्रलोचन चण्डमुण्डरक्तबीजवधो नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्याय अथाष्टचत्वारिंशोऽध्याय राजोवाच धूम्राक्षं चण्डमुण्डं च रक्तबीजासुरं तथा भगवन् तं देवया श्रुत्वा शुम्भसुरार्दना किं काश्चित् ततो ब्रह्माणे तन्मे ब्रूहि साम्प्रतं शुश्रूषवे जगद्योने शश्रितं पापनाशनं ऋषिरुवाच हतानिमान् दैत्यवरान् महासुरो निशम्य राजन्महनीये विक्रम अजिज्ञपत्सवियगणान् दुरासदानाभिधोच्चारन् जातसम्मदान् बलाविन्ता सम्मिलिता समागया जया शया कालकंसम्भवा सकाले क्यासुरमौर्य दौर्दास्तथा परे पयाशु प्रयान्यन्तु ते निशुम्भुशुम्भोदितिजा निदेशतन्नार्थधीरुणो निर्याम्बुभूतु बल्यान् यनुकाबलिनोस्तद्धोधरादिनाशर्वन्तशलभा इवोत्थिता प्रवादयामास्मृदङ्गमर्दलं स्वभेरिकाडिण्डमर्झरान्कं रन्स्थले सज्जहुषुरन्प्रिया सप्रिया सरङ्गत्पराययु भटाक्षते युद्धपटावृस्तास्तदारं सथलीमापुरपापविग्रहा गृहीतशस्त्रास्त्रचया जिगीषया परस्परं विगृह्यन्त उल्बनं गजाधिरूढास्तुरागाधिरोहिणो रणाधिरूढाक्ष यथा परे सुरा अलक्ष्यन्त स्वपराजनान् मुदा सुरेशसंगे समरे भिरे ध्वनि शतघ्निजनितो मुहुर्मुहुर्बभूव तेन त्रिदशा समेजिता महान्धकार सम्पद्यताम्बरे विलोक्यते नो रथमण्डलं रवे पदातयो वव्रजुरेव कोटिष्प्रभूतमाना विजयाभिलाक्षिणा रथाक्षका वारणगाथा परे सुरा निरीयुकतिकोटिशो मुदा अशुक्लशैला इव मत्वारणा अतानिषु श्रीतकृतिशब्दमाहवे क्रममेलकाक्षापि गद्दलध्वनिवितन्वते क्षुद्रमहीधरोपमा ह्याक्षहर्षन्त उदग्रभूमिजा विशालकण्ठभरना गतेर्विदा पदानि दन्ता बलमूर्धना बिभ्रत्सुरिचरे व्योमपथा यथा वये समीक्ष्य शत्रो बलमित्थमापतचकार सञ्जय धनुरम्बिका तदा ननादघण्टा रिपुसाददायिनी जगर्ज सिंहोऽपि सन्टा विधूनयन् ततो निशुम्भस्तु हिमाचलस्थितां विलोक्य रम्यभर्णायुधां शिवां गिरं बभाषे रानीभरा पराविलासिनी भावविचक्षणो यथा भवादृषिणा रमणीये विगृह्णोति तीर्णं खलु मालतीदलं कथं करालहवमता मा तत्तनोशयसे महेशि तेनैव मनोज्ञव
वर्ष्मना इतीरयित्वा वचनं महासुरो बभूव मौनी तनुवाच चंडिका वृथा किमाथासुरा मूढसंगर्कुरुषभ नागालाय मन्यथा व्रज ततोतिरुष्टसमरे महारथक्षकारबाणावलिवृष्टिं दुतां घना घना संवर्षुर्यथोत्तरकं रणस्थले प्रावडीवागतास्तदा शरैषिते शूलपरक्षशायुधे सभिन्दिपाले परिघे शरासने भुषुषिण्डाकापरासर्क्षुर्पसंज्ञे कर्महासिभिः संयुयुधे मदोदते विभ्रमुस्तत्समरे महागता विभिन्न कुंभा असिता दिस्सन्नभा चलद्वलाकाधवाले विकेतवो विसेतवा शुंभ निशुंभ केतवा विभिन्न देहादितिजशोपमा विकंधरा वाजीगना भयंकरा परासवा कालिकया कृतारणे मृगारिणा चामेश तांपरे सुरा विसुसुरक्तवाहस्तंतरे सरिचायास्तत्र विपुल्लुवे हते कचा भटाना जलनिलीको मास्तु दुत्तरीयं सितफेन सन्निभं तुरं सादी तुरगाधिरोहिणा गजस्थान भय पंत गजारुह रथिरथेशं खलु पतिरिंघ्रिगान सम्प्रतिद्वन्दिक कलिर्महान्भुता ततो निशम्भु हृदयेऽवचिन्त्य यत्कराल कालो यमुपागतोऽधुना भवेरिद्रोऽपि महाधनो महाधनो दरिद्रो विपरीतकालता जडो भवेत् स्वीतमतिर्महामतिर्जडो नृशंसो बहुमन्तु संस्तुता पराजयं यान्ति रणे महाबला जर्यान्त संग्राम मुखे च दुर्बला जयो जयो वा परमेश्वरेच्छया भवन्तनायासत एव दयिनां न कालमुल्लङ्घ्य च शशाक जीवितुं महेश्वरा पद्यजनी रमापति उपेत्य संग्राममुखं पलायन साधु वीराहृदे नुमन्वते परन्तु युधे कथमेतया जयो विनाशितं मे सकलं बलं यया इयं हि नूनं सुरकर्म साधितुं समागता दैत्यबलं च बाधितुं पुराणमूर्ति प्रकृतिपरा शिवा न लौकिकीयं वर्णिता कदापि वाग्वधोऽपि नारी विहितो यशस्करा प्रगीयते युद्धरसं लिलिक्षुभिः तथाप्यय कृत्वा स्मरं कथं मुखं प्रदर्शयामोऽसुर राजसन्निधौ विचारयित्वेति महारथो रथं महान्तं धायस्य नियन्तचोदितं ययो द्रुतं यत्र महेश्वराङ्गना सुराङ्गना प्रार्थिर्यौवनोद्रमा अवोचदेना स महेशी किं भवेद् बिहर्तिर्व्यर्तनजीवी बिभर्ते तवास्ति कादशा यदि योद्धुमावयोस्तदा रणासयादृत्यु युद्धसत्पटे उवाच कालीं प्रति कौशिकी तदा समीक्ष्य तामेष दुराग्रहो नयो करोति कालो विपदागमे मतिं विभिन्नवृत्तिं सदस्तत्प्रवर्तकस्ततो निशुम्भुभिजगान् चण्डिकाशरे सहस्रक्ष तथैव कालिकां बिभेदबाणासुरप्रचोदितान् सहस्रखण्ड स्वशरोत्करे शिवा तथा समुत्थापय कृपाणमुज्ज्वलं सचर्मकण्ठीरवमुन्धर्य ताडयत् विभेदतं चापि महासेनाम्बिकात् यथा कुठारेण तरुं तरुच्छिदः स भीमखड्गो निचखान्मार्गनं पराम्बिका वक्षि सोऽपि चिच्छते पुंस्त्रिशूलं हृदे क्षिपत्तदप्यचूर्णयन्मुष्टिनिपातनेन सा गदां समादये पुनर्महारथो भयेभ्यधावदम्बामरणोन्मुखोऽसुरो अचूर्णयत्तामपि शूलधार्या पुनस्त्रिशूलं विदारसोऽनन्या ततोऽम्बिका भीमभुजङ्गमोपमे सुरदिशां शोणितचूषणोचिते निशुम्भ मातनीयशिलीमुखे शितैर्निहत्य भूमिमन्यदिशोक्षिते निपातिते मानबले सुरप्रभो कनीयसि भ्रातरीरोषपूरितः रथस्थितो बाहुभिरिष्टिभिर्वतो जगाम यत्र प्रमदामहेशितु अवादयच्छङ्कमरिन्दम तदाधुना स्वनं चापि चकार दुस्सहं ननादसिंहोऽपि सन्ताविद्युनयन् बभूव नात्रत्र
नादित्तनभ ततोटटहांश्चग्दम्बिका करोति तत्र सुस्तेन सुरारयो किला चेति शब्दं जगदुस्तदासुरा यदाम्बिको वाचरणे स्थिरो भव स दैत्यराजो महतीं ज्वलिच्छिकाममोच शक्तिं निहता च सोलक्या बिभेद शम्भु प्रहिताञ्छरा शिवे ऋत्वांसोऽपि सहस्रदाशरान् त्रिशूलमुत्क्षिप्य जघान चण्डिका महासुरं स पपात मूर्छिता विभिन्नपक्षो हरिणा यथा नगा प्रकम्पयन् धावन्सुधासवारिधं ततो मृषित्वा त्रिशिखोद्भवां यथा विधाय बाहु नयुतं महाबला स कालिकं सिंहयुता महेश्वरी जगान चक्रैर्मर्क्षैः तदस्य चक्राणि विभिद्य लीलया त्रिशूलमुद्धूर्य जघान सासुरं शिवा जगत्पावन पाणिपङ्कजादुपात् मृत्यु परमं पदं गतो हते तस्मिन् महावीर्ये निशुम्भे भीमविक्रमे शुम्भे च सकला दैत्या विभुषु बलि सञ्जनी भक्षिता अपरे काली संहारधैर्यमर्दुषा पलायितास्तथा अन्ये च दश दिक्षु भयाकुला बभूवुर्मार्गवाहिन्यः सरिता स्वच्छपाथसा बभूर्वाता सुखस्पर्शामिमरलत्वं ययो नभा पुनर्यागसमारभे देवैर्बहमाशिभिस्तथा सुखिन्षा भवन् सर्वे महेन्द्राद्या दिवोकसा पवित्रं परं पुण्यं मायाक्षरितं प्रभु दैत्यराजवधो हितं श्रद्धया संभयसेत स मुक्त्वे हाखिलान् भोगान् स्त्रीदशैरपि दुर्लभान् परुत्रोमालयं गच्छन्महामाया प्रसादता ऋषिरुवाच एवं देवी समुत्पन्ना शुम्भासुरनिर्बहणे प्रोक्ता सरस्वती साक्षादुमा शावीर्भवा नृप इति श्रीशिवमहापुराणे पंचमोमासहितायां निशुम्भशुम्भोपाख्याने सरस्वती प्रादुर्भावनाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः।